Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में P1 पेपर 1 का क्वेश्चन 2C of 2024. Find the image of the line x is equal to 3 minus 60, y is equal to 2t and z is equal to 3x plus 4y minus 5z plus 26 is equal to 0. 20 मार्क्स का है, एनालिटिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. तो आइए देखते हैं. इमेज ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन क्या होती है? वो एक रिफ्लेक्शन है लाइन का थ्रू ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन. रिफ्लेक्शन क्या है? ए मिरर इमेज ऑफ ए शेप वेयर एवरी पॉइंट इन द ओरिजिनल इमेज is the same distance from its corresponding point in the reflected image. The reflected image has the same shape and size as the original but faces in the opposite direction. तो यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ एक लाइन है, तो ये किसका इमेज इधर होगा एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. यहाँ हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वी कैन टेक वन हॉरिजॉन्टल प्लेन and one line here and we take one point P on this, we draw a perpendicular and this will be, and image will be here somewhere below at same distance, means this distance and this distance is same. We say this is foot of the perpendicular, so FP will be, say this is I, FI we can say. Now what we have to do, we have to find this point on line, then we will have a normal vector and we will find foot of perpendicular and then we will find the I distance, that is. So when t is equal to 0 we can find a point on the line. When t is equal to 0, point on the line is x is equal to 3, y is equal to 0 and z is equal to 3. इस क्वेश्चन को देखते हुए ये आप याद रख कि ओनली पी.एन. चटर्जी या कृष्णा सीरीज से जो आप एनालिटिक ज्योमेट्री करते हैं या एनी अनदर बुक लाइक आई हैव टेकन another book for second degree equation, that is not sufficient. You have to do the 12th class analytic geometry also, because this is from there only. So x is equal to 3, we got y is equal to 0 and z is equal to 3. It gives the point P, so we get point P 3 0 3. Now equation of the plane is given to us and we write it in standard form. 3x plus 4y minus 5z is equal to minus 26. Now we'll find the normal vector of the plane and that is n cap of the plane, and it can be derived from the coefficients of x, y and z. So n cap is equal to 3 is coefficient of x, 4 of y and minus 5. So this is n cap. Now we find the foot of the perpendicular from the point P on the plane. So find the foot which is xyz of the perpendicular from the point P on the plane. तो इसका फॉर्मूला होता है foot is equal to, we write f is equal to P plus lambda n. P हमें पता है, this is point, n cap हमें पता है, but lambda is a scalar and इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंड वी नीड टू डिटरमिन इट. सो f इज 3p की वैल्यू है एंड n भी 3 है, लैम्डा x कंपोनेंट, y इज 0 प्लस 4 लैम्डा एंड z इज 3 माइनस 5 लैम्डा. अब ये फुट जो है प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग these coordinates in the equation of plane, तो ये हो जाती 3 into 3 plus 3 lambda plus 4 into 4 lambda minus 5 into 3 minus 5 lambda is equal to minus 26. So this comes 9 plus 9 lambda plus 16 lambda minus 15 plus 25 lambda is equal to minus 20. So हम इसे अगर चेक करें, so this comes 50 lambda because 25 and 16 and 9, so this is 25 20 50 lambda and minus 15 26 and 9, so minus 26 plus 15 and minus 9, so 50 lambda is equal to, this is 26 and 9 is 35 में से 15 गए, so minus 20, so lambda is minus 2 upon 5. So coordinates of the foot of perpendicular, this is 3 minus 6 upon 5 because 3 plus 3 lambda
and then we have minus 4 into minus 2 upon 5, so minus 8 upon 5, and then last is 3 minus 2, 3 minus minus plus 2, which is 5. So this comes f 9 upon 5 minus 8 upon 5 and 5. Point with respect to the plane, this will be I is equal to P plus twice distance between foot and P point, foot minus P, उसका twice कर देंगे. सो P हमारे पास है 303 प्लस 2, फुट हमारा फाइंड आउट हुआ है 9/5, एंड P की वैल्यू साथ में लिखते चलते हैं -3, माइनस 8/5 माइनस 0 इज P वैल्यू एंड 5 माइनस 3. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 303 प्लस 2, ये हो गया 15 माइनस 6/5 माइनस 8/5 एंड 2. सो वी गेट 303 प्लस माइनस 12/5 माइनस 16/5 एंड 4. ऐड कर दें इनको. I is equal to 3 minus 12/5, 0 minus 16/5 and 3 minus 3 plus 4. So this comes I is equal to 3/5, 16/5 with minus sign and 7. So this is the answer.